इनकोडर वो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं. हम इसको इनकोडर नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं स्पीकर. ही और शी इज स्पीकिंग. वो इनकोडिंग बॉडी लैंग्वेज में भी थी. अब कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है जी कि पहला सिलेबस का हिस्सा है, और जो लिंग्विस्ट हैं, जो साइको लिंग्विस्ट हैं, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्ट हैं, अप्लाइड लिंग्विस्ट हैं, साथ साथ अभी एक लड़की ने हेयरिंग लॉस और हेयरिंग मैनेजमेंट कैसे होता है. तबस्सुम साहब. जैसा कि आप सबको पता है कि हेयरिंग लॉस इज़ वेरी कॉमन, बट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि जिस शख्स को हेयरिंग लॉस होता है वो खुद इस बात से नावाकिफ होता है. उसे फ़ौरन अंदाज़ा नहीं होता कि वो हेयरिंग लॉस की तरफ जा रहा है. आप सबको इसका ग्रेट हेयरिंग लॉस के साथ थे तो वो तो इसका बेनिफिट उठा लेते थे, लेकिन जैसे जैसे एम्प्लीफिकेशन बढ़ती जाती थी तो इंडिविजुअल अनकंफर्टेबल जोन के अंदर आता था और उसको परेशानी होने लगती थी. और उसके लिए एक फीचर ये दिया गया था कि वॉल्यूम कंट्रोल था जिससे वो अप एंड डाउन करता था. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज जो टॉपिक सिलेक्शन है, ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया मैंने? कुछ डॉक्टर से मेरी बात हुई थी तो मुझे ये भी इनपुट आया कि जनाब ये टॉपिक कोई इतना अहम नहीं है, आप इस पे बात ना करें. तो भाई कम से कम अपने क्लिनिक में कुछ नहीं है, आपके पास पायोडीन तो है, आपके पास अल्कोहल स्वाब्स तो हैं, आपके पास साइडेक्स तो है, तो आप कुछ ना कुछ डेटल तो है आपके पास, तो कुछ ना कुछ एक हद तक आप कोशिश करनी शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक मतलब आप तहैया कर लेंगे तो आगे जो है आपके लिए चीज़ें आसान होती चली जाएंगी और आपका जो मकसद है. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Before starting my presentation, I must thanks to the committee that they have given me this opportunity to present myself and share some information among you people. And also I will Thank you, Shahid Ali sir. He actually takes care of clinical affairs, as I mentioned earlier. But even that, after that, he attends the Samadhyar. Ladies and gentlemen, my friends, students, it has been a very successful event, and it will be like tomorrow and day after tomorrow. And this session was a jam-packed session. People are still standing behind the last row. Thank you very much. And one announcement is there. After this session at 11 o'clock, there will be another session back to the ENT specialist. Or I request, when ENT specialist is observing that he has come to the limit that I have nothing to give him, he needs rehabilitation or he needs good counseling from a speech pathologist or an audiologist. He must be recommended, that patient must be recommended to the audiologist. There is another thing what we miss in our professional attitudes. Primarily, we do care, but when it comes to the secondary care, we don't really recommend. I can do it, I will do it. But when it comes to secondary stage, these people interface with ENT specialists and neurologists. As we have been discussing before, the cerebration is the main cause of your speech. If articulators are correct, they are doing perfectly all right, they are in order. But there is some dietetics. You are working with psychologists. Most of the time you are working with psychiatrists or occupational therapists. So this profession, speech pathology, as an integrity to that profession, it is connected to various professions. And Europe and America has gone the same phase what probably we are going through. We are not acknowledging each other very much. But this conference has smashed those concepts
that we are different from these people. No, we are not. We learn from ENT specialists and we are taught sitting beside them, but they can recommend that this is the speech pathologist's work. You must go to the audiologist to be recommended for your hearing aid. Dietitian has to work with speech pathologist. Love affair. We talk about neighbors. We talk about helping each other. We talk about Juma Mubarak. Juma Mubarak. We are theoreticians. The neighborhood we had to create as Rasulullah instructed or as he practiced, it is in our knowledge. It is not in our practice. So we cannot be theoretician. So we need to be collaborating really in true spirit. Most of the things. But these 4 things, computer cannot perform. Nobody can replace people having these 4 skills. They will survive for years and years because machine cannot communicate, machine cannot collaborate, machine cannot create, machine cannot think critically. So what we need to do now? We need to have a platform where people are professionally members of that society. I'm not going to be very long, but I'm very grateful for inviting me and giving a chance to speak. And listening to the exhaustive talk and a session on audiology and speech therapy is very pleasing. After my talk, a lot of my ENT friends won't be my ENT friends. And I'll tell you why. I treat audiologists and speech therapists at equal par with ENT doctors. I want they should be given the same grades with their witnesses in this hall who have been fighting in this country for the same grades, 17 or 16. They should be respected. They are doing great, fantastic job in other parts of the world. They are treated equally with respect. We should give them the same respect in this country. And I would say, Dr. Shakil pinched some of my words. I want you to have a national organization, a membership, student, and you should have an annual conference every year and also be a part of the ENT. I'm not saying divorce yourself, but establish and also join with other international organizations, because speech therapy and rehabilitation in audiology is a big part of a patient's journey when he suffers. And हमारे लिए और सबके लिए बहुत हसीन और खूबसूरत वादे किए और ये वादे के बड़े पक्के हैं, ये मुझे पता है। मैं डॉक्टर नबी साहब से गुजारिश करूंगा वो चंद अल्फाज बोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मोहतरम उस्ताद डॉक्टर हारून खान के बाद मैं क्या कहूँ आपसे, क्योंकि हमारी पुरानी दोस्ती है आपस में। बस मुझे सबसे पहले तो बात यह है कि 31st कॉन्फ्रेंस, आई हैव द ऑनर ऑफ अटेंडिंग द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, और आज 31st कॉन्फ्रेंस पे मेरी इससे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि हमने ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच पैथोलॉजिस्ट को इसमें शामिल किया। तकरीबन जब भी कराची में होती थी मेरी कोशिश होती थी कि ये शामिल हो, लेकिन आज सरकील और हमारे डॉक्टर खालिद अशरफी साहब की कोशिशों से ये इतना अच्छा इवेंट हुआ कि मुझे खुशी इस तरह हो रही है कि हमारे जो मुस्तकबिल के मेहमान हैं वो इसमें शामिल है, और इंशाअल्लाह आज आपकी बुनियाद रख दी गई है, और आप ना सिर्फ ENT के साथ भी होंगे बल्कि एक अपनी पर्सनल आपकी जो एसोसिएशन होगी उसकी भी 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुआ करेगी।
क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लोग आपके मेरे सामने बैठे हुए हैं और ये सारे के सारे माशाल्लाह इस प्रोफेशन के अंदर नंबर 1 है। अच्छा, मैं एक बात ख़त्म करूँ, इतना टाइम दूसरे सेशन का हो रहा है कि आपका प्रोफेशन जो है ये अनलिमिटेड फील्ड है इसकी। मेरे पास ऑडियोलॉजिस्ट आता है, सर कि हम बस ये कान के टेस्ट ही करेंगे। मैंने कहा नहीं, ऑडियोलॉजिस्ट इंशाल्लाह जब आपके डेवलप होंगे तो एक पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट होगा, एक एडल्ट ऑडियोलॉजिस्ट होगा, एक स्कूल ऑडियोलॉजिस्ट होगा, एक मिलिट्री ऑडियोलॉजिस्ट होगा, एक ऑक्यूलर इम्प्लांट ऑडियोलॉजिस्ट होगा। ये तो छोटी सी लिस्ट है। स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, एक स्वालिंग स्पेशलिस्ट, फिर उसके अलावा न्यूरो स्पीच थेरेपिस्ट और न्यूरो स्वालिंग थेरेपिस्ट। हर कोई आजकल जो है उसकी अपनी अपनी फील्ड बढ़ रही है। हम एक सिंपल ट्रेकियास्टोमी करते हैं, उसके अंदर पेशेंट की फीडिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, वो एक स्पेशल फील्ड है। तो आप लोग समझिए कि आपने एक समुंदर में हाथ रखा है और माशाल्लाह समुंदर के, मैं आप इनकी बैकग्राउंड नहीं बताना चाहता हूँ, ही इज द क्या कहना जी, बहर इस समुंदर के भी मालिक हैं और नॉलेज भी इनके समुंदर की तरह है, जो इन्होंने मोटिवेशन स्पीच दी है। इंशाल्लाह आपको एक नेशनल हॉस्पिटल से मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मेरा ये सफ़र 17 साल पुराना है। मेरे कुछ टीचर्स भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पे डॉक्टर नजम। ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने हमें ऑडियोलॉजी के बारे में नॉलेज दी 16 साल पहले। हमारा ये सफ़र तब से चल रहा है। हमने शुरू किया था कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट होते क्या हैं इसे। आज यहाँ पर खड़े होकर मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि हम इस सफ़र में यहाँ तक पहुँच गए। आज हम अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तान की वो अनाउंस करने जा रहे हैं। I must add a little bit here about the things that we as an ENT people are never feeling bad to have you people to go abreast with it. And this is the evidence, this session today is an evidence that what we have done. We had made a tremendous efforts to make you people go along with us, to run same abreast with us, okay? So that we never mind it, we never feel it, and now the era has changed. There are a lot of people behind who have got an ideology that we are working together, and now the era is that to work together. We should not work separately, okay? So just leave everything in the past, what had happened. We never feel that you're ahead or behind us. We always think that we are doing a part which is very, very much necessary, and we cannot run without you. We are accepting it, and this is the evidence. This session is an evidence, is a practical evidence of the things which you are seeing it now, okay? And it will go forwards. We know, Mr. Shakil and all the people are knowing that what is the tremendous effort we have put in to make this session today.